An initiative to increase the population of the critically endangered Great Indian Bustard is bearing fruit. Officials have reported that a fertilized egg of the bird laid in Rajasthan's Jaisalmer has successfully hatched in Gujarat's Kutch, 770 kilometers away. The fertile egg was transported as part of the Jumpstart initiative to help revive populations in areas where male birds are no longer present. The initiative, coordinated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the State Forest Departments of Rajasthan and Gujarat, and the Wildlife Institute of India, was planned a year ago. This is the first such interstate initiative in the country. Kutch, which lost its male population of Great Indian Bustard years ago, became the focus of this effort. गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है ये भी पहले GIB का वितरण क्षेत्र है और यहाँ पे वर्तमान में 3 से 4 GIB जो फीमेल देखी जा रही है और कई सालों से यहाँ पर जो है GIB का जो मेल नहीं देखा जा रहा। इस कारण यहाँ पर जो भी होता है, जो अंडे देती है GIB फीमेल्स, वो इनफर्टाइल एग होते हैं। इस प्रकार जो है इसको अब इस पे जो MOF ने इसके ऊपर विचार किया गया तथा इसके ऊपर ये जो यहाँ से जो 21 तारीख को जो सब ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ से एक फर्टाइल एग को वहाँ भेजा गया, जो कि वो 22 तारीख को वहाँ पहुंचा और 22 तारीख की शाम को इसको जो इनफर्टाइल एग था उसको एक्सचेंज कर दिया गया। जो फीमेल जो GIB थी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फीमेल GIB उसने उस एग को एक्सेप्ट करके उसको खा और उसको इसमें से 26 तारीख को इसमें से एक चूजे ने जन्म लिया है। The egg, sourced from a conservation breeding program in Rajasthan, was carefully moved over a 19-hour journey by road in a handheld portable incubator. It was then placed in a nest on March 22nd. Days later, the female bird completed the incubation process, and on March 26th, the chick hatched. It marked the first such birth in the region in a decade. Field teams have since confirmed that the chick is being nurtured by its foster mother. For conservationists, this small step could signal a hopeful path forward for one of India's most endangered birds.